continue to Pahadi section. वो कहते हैं ना कि हमने जिनको चाहा उनके दिल बदल गए, समंदर गहरा था साहिल बदल गए, कत्ल हुआ हमारा
and Faculty of Medicine. CEGR certified academic leader and an APTI fellow. Talking about his qualification and experience, he has done B.Pharm, University's third rank in 1994 and found gold medalist in 1998 and PhD in 2008. He has 26 years of experience in teaching and research. His major research areas are impurity characterization and quality control of herbal drug products. He has published more than 100 publications with average grade and has 3 Indian patents granted. He has published 5 books and book chapters. The value of more than 60 lakh rupees has been granted for his projects in CSIR, UGC and AICTE. He has life membership of APTI, IPGA, Punjab Academy of Sciences, CEGR and SPSTN. Talking about his contribution and achievement during his service, he has established the alumni network of the department. He has organized several national and international conferences, workshops, and seminars. He is instrumental in spreading awareness about rational uses of medicine in rural areas. He has awarded with APTI Fellow Award in 2024 for contribution toward the pharmacy profession and teachers frequently invited to deliver talks on Indian knowledge system by universities all over India. Now, I'd like to invite our keynote speaker, Dr. Gulshan Kumar Bansal, to come on the stage to share his valuable knowledge with us. A very good afternoon to all and all of you. Good energy after a good strong cultural break. Again, let me extend congratulations and gratitude to the management of Dreamz College of Pharmacy and lecturer and principal Dr. Vivek Khilra, for giving me an opportunity to share my learnings with you on this very appropriate topic, opportunities and challenges.
दिस इज द डिजिटल टेक्नोलॉजी, हमें जाना ही नहीं पड़ रहा. बाय डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अब ऑनलाइन सेगमेंट, राइट, ऐसे दे विल ग्रो. अगर हम स्मार्ट हेल्थ केयर मार्केट की बात करें, दैट वाज द इन जनरल हेल्थ केयर. स्मार्ट हेल्थ केयर मीन्स where we are using smart watches, where we are using you see smart dosage equipments like inhalers की बात करते हैं, मीटर डोजेस इंसुलिन की बात करते हैं, प्री फिल्ड सिरिंजेस की बात करते हैं. दीज आर द स्मार्ट ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स. तो स्मार्ट हेल्थ केयर है वो, उसकी भी जो मार्केट है इट इज़ सेट टू ग्रो फ्रॉम $201 billion in 22 to 1095, 5 time increase. It is going to increase क्योंकि हम और ज़्यादा टेक्नोलॉजी से वही हो रहे हैं, हमें और ज़्यादा ईज चाहिए. और जो मेजर मार्केट कंपनीज हैं जो इस सेक्टर को प्रमोट करने वाली हैं आगे, you can see here Rossnet, Logitech, then Turner, Samsung, Cisco, IBM, BD, Airstrip, Stanley. These are the different industries which are involved in innovations in smart healthcare. चलो अब यहाँ से करो नेक्स्ट. Okay. Then health services, healthcare services like nursing, like patient counseling. These come under services. So they are also bound to grow. See here from 23, $348 billion market. 23 में ये इतनी मार्केट का साइज है, and it is about to grow to $10,908 billion in the next 5 years. इंडिया में ना हमारा अभी ये सर्विसेज वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बट मेट्रो सिटीज में काफी पॉपुलर हो रहा है क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं. तो जो एजिंग पेशेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं उनकी देखभाल के लिए या तो मैन पावर नहीं है घर पे या टाइम नहीं है. तो वेस्टर्न वर्ल्ड में ये काफी पॉपुलर है कि हायर स्पेशलाइज्ड पर्सनल्स which are trained in basic healthcare, which are trained in basic nursing to look after the aging people, to look after the diseased people who are in the recovery stage, and they are paid for handsome amount of money for that. तो ये जो कल्चर है ये अभी इंडिया में मेट्रो सिटीज में पॉपुलर हो रहा है, बट जो मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारे इंडिया में रूरल एरिया है तो वहाँ पे क्योंकि फैमिलीज या तो जॉइंट है या क्लोज में रहती है तो वहाँ पे इस चीज का ज्यादा अभी चलन है नहीं. बट बिकॉज वेस्टर्न वर्ल्ड में काफी ज्यादा चल रहा है तो इसका मार्केट साइज करंट अभी देखो बाकी सारे मार्केट साइज से ज्यादा है. Consulting services, healthcare consulting services, that may be physicians, that may be the psychologists, right? That is also bound to increase. So medical device companies, health insurance payers, pharmaceutical biotechnology companies, healthcare providers, जो counseling services और consulting services और freelancers की बात करते हैं, so it is also bound to increase. Pharmaceutical market size. Pharmaceutical means the drugs we are talking about, right? The drug deliveries or the products that will also increase from around $1,559 million to $1 billion to 2,832, almost double. Because consumption of drugs is a never-ending thing. Like COVID-19, we see a byproduct variation. That so for the branded segment was major one, but now as we said that generic drugs and OTC products they are going to lead. Then prescription segment they are the largest market, 88%, and now the OTC products will take over. And formulation tablet segment is around 27%,
and this will remain the major market because that is the easiest way to consume drugs. सबसे ज़्यादा आसान tablet लेना ही है. So these are the growth of the different sectors of health sector. The growth of different health sectors. And the major drivers for this growth is increasing demand for patient-centric treatment and improvements in the healthcare infrastructure. Patient-centric, जैसे कोविड-19 जब आया था तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि हमें केयर करने के हम अपनों की भी केयर नहीं कर पा रहे थे. घर में हमारे किसी को कोविड हो रहा था उसकी केयर हम खुद नहीं कर पा रहे थे. उनको कहते हैं भैया तो कमरे में बंद हो जाए अपनी केयर अपने आप. राइट. तो पेशेंट-सेंट्रिक केयर इसकी डिमांड इंक्रीज हुई है. देयर शुड बी सम स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स व्हिच कैन लुक आफ्टर दोस पेशेंट्स एंड दे नीड इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. जो हमारी सेकंड वेव आई थी उसमें ज्यादा मोर्टेलिटी हुई थी. द रीजन वाज क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था दैट वाज नॉट रेडी टू सपोर्ट टू कैटर टू द नीड्स ऑफ द पब्लिक हु आर सफरिंग फ्रॉम द कोविड-19. टेलीमेडिसिन एंड टेली हेल्थ मतलब सारे घर में बंद थे कोविड के 19. अगर हमको किसी डॉक्टर के साथ बात करनी थी कंसल्टेशन लेना था तो फोन से लेते थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे. दैट इज टेलीमेडिसिन और टेली हेल्थ. तो अब उसकी आदत पड़ गई है. हमें कहते हैं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत न पड़े, घर बैठे बैठे हमारा ट्रीटमेंट हो जाए, घर बैठे बैठे हमारी बीमारी का पता चल जाए. सो दैट इज टेलीमेडिसिन. तब उसकी आदत पड़ गई है. सो दैट इज बाउंड टू ग्रो. Rising education and awareness about healthcare system and the services. अब हम सभी को क्योंकि हमारी अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है, हम सभी की इन जनरल हर एक परिवार की इनकम विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हुई है, अवेयरनेस बढ़ी है हेल्थ को लेकर के. तो हमें लगता है कि हमें पेशेंट केयर बेटर मिलनी चाहिए. अगर हॉस्पिटल जाए तो हॉस्पिटल साफ सुथरे हो, बेड साफ सुथरे हो. राइट. तो वो एक डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है. राइजिंग पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है हमारी, और साथ के साथ क्रॉनिक डिजीज भी इंक्रीज हो रही है बिकॉज हमारा जो लाइफस्टाइल है वो अब बिकॉज ऑफ द चेंज इन द लाइफस्टाइल, लेसर ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी, मोर ऑफ द डिसीज स्टेगनेंट एक्टिविटीज. तो हमारी क्रॉनिक डिजीज लाइक डायबिटीज, लाइक अल्जाइमर्स, like thyroid, so they are increasing because of the lack of physical activities. Growing healthcare expenditure, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ गई है तो हम हेल्थ केयर पे ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं. Several you see health clinics and they have hired pharmacists, they have hired new physicians, right, so that health can be accessible, health facilities can be accessible to the population. And government of India ने जैसे अभी 22 तक 1,400 करोड़ रुपीस स्पेंड कर दिया है. तो ये सारा जो पैसा स्पेंड हुआ है ये कहाँ हुआ? हेल्थ सेक्टर में. तो हेल्थ सेक्टर में स्पेंड हुआ तो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हुआ, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स भी हुई है. तो वो इन्वेस्टमेंट्स आगे और रिटर्न्स लेके आने वाले हैं. नेशनल हेल्थ मिशन के लिए सिर्फ 27,000 करोड़ रुपीस उसके लिए एलोकेट हुआ है. आयुष्मान भारत स्कीम चल रही है जो इंडिया की, ये जिसमें हर एक फैमिली को 5 लाख रुपया पर ईयर उनको फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा. तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है फॉर द ग्रोथ ऑफ हेल्थ सेक्टर. कोई भी पर्सन जो एलिजिबल है इस स्कीम के लिए वो ऑब्वियसली हॉस्पिटल जाएगा. Then higher access to medical reimbursements. अब हेल्थ इंश्योरेंस बहुत पॉपुलर हो गया आजकल, एटलीस्ट अर्बन एरिया में हर एक घर ने अर्बन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ले रखी है. हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम वगैरह कैशलेस स्कीम्स. तो वो कैशलेस स्कीम में वो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल्स में मोर फ्रीक्वेंटली जाते हैं. ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट्स इन हेल्थ केयर, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हो, हर जगह इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो इंक्रीज हो रही है. सेकंड जो टर्म है कीवर्ड दैट इज अ डिजिटल टेक्नोलॉजी. तो हेल्थ केयर का हमने देखा कि हेल्थ केयर में क्या क्या चीज आती है और कैसे कैसे उसकी ग्रोथ हो रही है और कैसे उसकी ग्रोथ प्रोजेक्टेड है. अब डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या चीज है? अब वी एवरीवन नोस व्हाट इज द डिजिटल टेक्नोलॉजी, बट इट इज इन जनरल we say the utilization of digital tools, systems and processes
for creating, storing, processing, and communicating information. It encompasses a broad range of technologies, including software, hardware, internet technologies, and digital platforms. अब यहाँ से लगता है कि digital technology is altogether different from the healthcare. It is, but digital technology, these technical things, they are integrated into the healthcare system. So that becomes digital health. So when these technologies, they are integrated into the healthcare system, we just call digital health care. Now this digital health care in India, it started in some 1990s or late 1980s, and at that time it was called as e-health. We call it electronic health. When it started with the electronic medical records. तो 1990s में एक काफी ज़्यादा फेमस एक करियर काफी ज़्यादा फेमस हुआ था मेडिकल राइटर्स दैट वाज जो वेस्टर्न वर्ल्ड यूएस की कंपनीज की जो पेशेंट हिस्ट्री थी उसको वो कर देते थे कंप्यूटराइज्ड. They used to listen to the conversation between patient and physician. उस कन्वर्सेशन से जो उनकी हिस्ट्री होती थी उनको वो रिकॉर्ड करते थे. रिकॉर्ड मींस उसका सॉफ्ट कॉपी बनाते थे, राइट? सो दैट इज अ इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड. सो दिस स्टार्टेड इन द 1990s in India, but in Western world it started in the 1980s. तो क्योंकि यहाँ पे मैन पावर बहुत सस्ती मिल जाती है तो यूएस वालों ने कहा कि वहाँ इंडिया वालों से काम करवाते हैं, राइट? तो ये वहाँ से स्टार्ट हुआ था. So WHO defines e-health as a cost-effective and secure use of information and communications technologies in support of health and health-related fields, including healthcare services, health surveillance, health literature, and health education, knowledge and research. तो किसी health से related किसी भी sector में जब हम electronic media information इसकी use कर रहे हैं, that is called as e-health. But subsequently अब वो जब ई हेल्थ की बात कर रहे हैं, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली इंटरनेट एंड इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स. बट धीरे धीरे एम हेल्थ मींस मोबाइल हेल्थ, धीरे धीरे जो हमारा हेल्थ रिकॉर्ड था, हमारी जो कम्युनिकेशन थी, हमारी जो प्रोग्रेस थी, हमारा जो डाटा था वो मोबाइल फोन पे आ गया, राइट? तो वो हमने उसको कहते हैं मोबाइल हेल्थ. तो ई हेल्थ से इवॉल्व होके एम हेल्थ एंड नाउ इट इज कॉल्ड डिजिटल हेल्थ बिकॉज इट इज नॉट जस्ट नाउ लिमिटेड टू द मोबाइल फोन. It is much more than that. So digital healthcare, it refers broadly to the instruments and services that use digital tools, resources, and information and communication technologies for prevention, diagnosis, and treatment of diseases, as well as to enhance and optimize health and lifestyle management to enhance healthcare experience to the patients. कोई भी डिजिटल टूल को हमने हेल्थ केयर में इंक्लूड करना है, इंटीग्रेट करना है, सो दैट वी कैन इंक्रीज द हेल्थ केयर एक्सपीरियंस. अगर कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल में जाता है, किसी डॉक्टर के पास जाता है, डायग्नोस्टिक टेक्निक के पास जाता है, तो वहां से वो खुश होके आए कि हाँ यार बड़ा अच्छा इलाज हुआ, बड़ा अच्छा साफ सुथरा था, बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट मिला, ड्रग्स भी इंटीग्रेटेड मिली एंड ऑल. So what are the different digital tools which are integrated into the healthcare system? These are just a few lists. Right? It is not just limited to this. Wearable gadgets or sensors. हम सभी स्मार्ट वॉचेस पहन रहे हैं, हम सभी मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, वो एक wearable सेंसर है, राइट? जैसे हम अगर जो एथलीट्स हैं, एथलीट्स को वॉक रनिंग करते हुए वो अपने यहाँ पे हम टैग बांधते हैं, राइट? और रिस्ट पे बांधते हैं टू मॉनिटर द फिजिकल एक्टिविटी, टू मॉनिटर देयर फिजिकल स्ट्रेस. They are the wearable gadgets or sensors. जैसे spectacles आती हैं, which are smart spectacles. Contact lenses आते हैं, which are smart contact lenses, right? So they are the wearables. Then health apps. हम सभी के मोबाइल फोन में कोई ना कोई हेल्थ ऐप पक्का होगी, right? तो वो क्या करते हैं, हमारे जैसे डेली के स्टेप्स हमारे कितने हो गए, हमारा हार्ट रेट कितना है, हमारा ऑक्सीजन लेवल कितना है, ये सारा उसमें रिकॉर्ड आ रहा है. Then online counseling sessions. Artificial intelligence and machine learning. This is the current topic. Artificial intelligence and machine learning. ये हर जगह यूज कर रहे हैं and healthcare में इसका main use हो रहा है diagnostics में.
और स्टूडेंट्स इसको आजकल यूज कर रहे हैं अपने पर्सनल गेम के लिए चैट जीपीटी। चैट जीपीटी हम सब बहुत ज्यादा यूज करते हैं एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन इट हैज बीन बैंड इन यूएस स्कूल्स एंड कॉलेजेस और हम इसको फ्रीली यूज करते हैं। They have banned it because it has a more negative impact. Chat GPT, right? So think about it. Why the US has banned it, and why not India has banned it, right? Then database for bioinformatics and drug design and drug delivery. तो जो हमारी न्यू ड्रग रिसर्च हो रही है उसके लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स चाहिए, ड्रग डिजाइन के लिए हमारे डाटाबेस चाहिए। देन इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड जैसे अभी बात करी थी हमने, टेली हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन इसके बारे में बात करी थी। Then customized and personalized medicines. हर एक पर्सन के लिए मेडिसिन अलग से डिजाइन होगी, right? That is called customized and personalized medicine. तो ये different digital tools हैं which are used in healthcare sector, and this is the growth of digital tools. So if you see, it started in 1962. The first digital tool. It came in 1962 for the healthcare. That was the first wearable sensor holder monitor for cardiac monitor. जो आजकल हॉस्पिटल्स में एक उसके साथ बेड के साथ अटैच होता है, राइट? तो होल्डर वो एक फर्स्ट था जो डिजिटल टूल आता 1962। उसके बाद 1982 में आया, 20 साल बाद, राइट? वायरलेस हार्ट रेट मॉनिटर, उसको वायरलेस कर दिया 20 साल में। अगर उसके बाद देखें तो 1982 के बाद 2012 कितने साल हो गए? another 20 years. उस another 20 years में कितनी टेक्नोलॉजीज आई? 1 and 2 are only commercialized. कौन कौन सी? कॉन्टैक्ट लेंस बायोसेंसर्स आ गए और फॉर ग्लूकोज मॉनिटरिंग, राइट, एंड ग्लूको वॉच, ये दो कमर्शियलाइज हुई हैं। फिर 2012 से लेके 2021 9 साल, इसमें कितनी टेक्नोलॉजीज आ गई है देख लीजिए। So this is how the technology is booming. It is at an exponential growth. So what are the different wearable technologies? We will quickly go through this because you already have seen the different wearable technologies. So see, these are the different wearable technologies which are used by human being or by any patient, like mask. The normal mask which we wear, right, that can be equipped with a sensor which will monitor through Bluetooth. So you get all your data on your mobile phone. Then throat sound, right, for monitoring your voice, quality of your voice. And then we have eyes. You can have a contact lenses, right? Those contact lenses can be used for monitoring your glucose level, so that we can see if there is any diabetic retinopathy or not, right? Then you have heart ECG. You have some wearable which are close to your heart, right? And they will monitor the real-time ECG, joint motions, wound healing, right? Then muscle EMG, right? So these are the different wearables which are available, which are commercialized, can be connected to the health app, and if there is any diverse or any adverse change or any adverse biochemical parameter detected, they can be further connected to a physician and or the ambulance, right, to make an alert so that the patient can be alerted that you have this particular pathophysiological state, you need immediate medical attention. So this is the total digital platform. So there is biochemical markers. they हमने अभी different parameters देखे हैं. There are different biomarkers like जो हमारे जैसे हमारे जो आ रहे हैं कहते हैं ना don't drink and drive, तो वो जो पुलिस वाले हैं वो हमारा चेक करते हैं, breathe analysis करते हैं कि इन्होंने शराब तो नहीं पी हुई. So that is what? That is again a smart device, a digital tool, right? Which can detect how much alcohol is there in our breath, right? So similarly, there are the other digital platform, digital technologies by which they can detect the different volatile markers,
हमारे जो सांस हम जो छोड़ रहे हैं उसमें कौन कौन से और गैसेस आ रही हैं, कौन से वोलेटाइल कंपाउंड्स आ रहे हैं। Dreamz suit receives FDA clearance for over-the-counter device to turn regular metered dose inhaler into smart inhalers. Inhalers जब शुरू हुए थे तो पहले वो मैनुअली ऐसे सप्लाई करते थे तो हमारे पास ड्रग आती थी, फिर उसके मीटर्ड डोज आ गए कि हर एक इनहेलर में इतने नंबर ऑफ डोजेस है. नाउ दे आर द स्मार्ट इनहेलर्स, राइट? वी हैव टू जस्ट place here and it will give you automatically the drug, and that is attached to your mobile phone through app, and where you get the complete, you see, record of the your meter dose of your inhaler, किसमें कितनी ड्रग बच रही है, कितनी आपके अंदर कितनी ड्रग उसने डिलीवर कर दी है. Smart contact lens for diabetes monitoring and diabetic retinopathy. So this is another smart device which is actually used, right? Then for the industry there are the RFID smart cabinets. अब जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनके पास जो फार्मेसी स्टोर्स हैं जहाँ पे महंगी महंगी दवाएं रखी होती हैं. जैसे अभी मेरे कल ही एक सेमिनार में पता चला था कि जो कॉस्टलीस्ट मेडिसिन है वो अभी 24 में एक लॉन्च हुई है, उसकी वन डोज की कीमत है 4.5 बिलियन यूएस डॉलर्स. वन डोज. उससे कम जो डोज है एक और प्रोडक्ट है वो 22 में, राइट डॉक्टर? 22 में आया था, उसकी कॉस्ट थी 3.8 मिलियन डॉलर्स सिंगल डोज. बट अब वो क्यों इतनी महंगी है उसका एक अलग स्टोरी है. बट द पॉइंट इज कि ऐसी इतनी महंगी महंगी चीजें जब पड़ी हैं फार्मेसी स्टोर में, राइट, और भी महंगी महंगी दवाएं होती हैं, तो उनको इन्वेंट्री को कंट्रोल करना, हमारे पास वो इन्वेंट्री में कितनी चीज बच गई है, राइट, फिर उसको इन्वेंट्री को रीफिल करना, इसके लिए बहुत मैन पावर लगती है. जैसे हम कहते हैं स्टोर इंचार्ज, स्टोर कीपर होता है, एक स्टॉक रजिस्टर लगता है, एंट्री लगती है, एग्जिट लगता है, वो सारे टंटा खत्म. जो आइटम आपको कॉस्टली है, जो जिसका आप रिकॉर्ड करना चाहते हो, उस पे RFID टैग्स लगती है. यू हैव द RFID कैबिनेट्स. तो जब उस कैबिनेट से वो मशीन मटेरियल निकल जाएगा, वो अपने आप, ये देखो सारा साइकिल है पूरा, मशीन से निकला, नंबर पहले RFID टैग एनरोलमेंट हो गई, जो भी हमारे पास सामान आया उसका टैग नंबर 1 पे जो दिख रहा है वो एनरोलमेंट हो गया. RFID टैग लगा दिया, उसको कैबिनेट में रख दिया. कैबिनेट से जब उसको निकाला तो वो ट्रैक एवरी आइटम टेकन और रिटर्न, जो भी जब आप उसमें रखोगे या उठाओगे वो ट्रैक हो जाएगा कि यहाँ से ये चीज निकली है, राइट. फिर उसका पॉइंट ऑफ यूज, राइट, रिपोर्टिंग कि उसको कहाँ पे उसको यूज किया गया है, हॉस्पिटल प्राइस, ये सारा जो सिस्टम है पूरा, ये एक क्लाउड पे कनेक्टेड है. तो जब वहां से वो यूज हो गया तो उसकी इन्वेंट्री में कितना रह गया, कितनी इन्वेंट्री उसको और चाहिए, वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर चला जाता है टू द सप्लायर. तो सप्लायर ऑटोमेटिकली वो वहां पे आके उसको रिफिल कर देता है. सो दिस इज, यू सी, मैन पावर इज जीरो, कुछ भी नहीं, कोई इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं, राइट. मैन पावर चाहिए ही नहीं, सारा ऑनलाइन सिस्टम हो गया. So that was the first thing, wearable or the sensors, right? Then Internet of Medical Things. हमने अभी IoT सुना है वर्ड, Internet of Things. An example of Internet of Things? Internet of Things. AI सभी ने सुना है ना? हाँ, तो IoT भी सुना होगा. तो अभी हमने जो चीज देखी है ना, wearable glasses, spectacles, है ना, ये भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है. The things which are connected through internet for communication, right? उसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं. तो जब वो मेडिकल हेल्थ केयर के लिए यूज करते हैं तब उसको कहते हैं मेडिकल थिंग्स, IoT. तो ये सारी जो हमने, जैसे हमारा वो इनहेलर देखा, इनहेलर है
इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स। हमारा जो कॉन्टैक्ट लेंस है इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स, RFID कैबिनेट देखा दैट इज द इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग, राइट। तो ये कैसे सारा कम्युनिकेट करते हैं इन जनरल, राइट। सो व्हाटएवर द डाटा इज जनरेटेड बाय एनी सेंसर और वेरिएबल गैजेट, राइट, दैट इज कनेक्टेड टू होम गेटवे, राइट। मैं इस क्लाउड पे गया, क्लाउड से वो इंटरनेट के थ्रू वो चला गया हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास, तो सारा डाटा एक जगह स्टोर हो रहा है। Telehealthcare, that is another digital tool that includes telemedicine, means telecounseling, telesurveillance, telediagnosis, telesurgery. That photo is shared through app with the physician, तो physician देख के बता देगा इसको ये प्रॉब्लम है, तो मोबाइल डायग्नोस्टिक भी हो गया, टेलीमेडिसिन भी हो गई और टेलीकम्युनिकेशन भी हो गई। These are the different types of health apps which we use, right? So this data is not just limited to the adults who are 50 to 80, but it's also applicable to all, right? Some use the health apps related to exercise, some related to nutrition or weight loss, sleep, blood pressure, meditation, or mental and stress. ये बहुत popular हो रहा है आजकल. And many companies they are coming out with the apps which are managing the mental health to relieve stress, and some of these apps, अब इसमें जो कैच है, जो चैलेंज है, चैलेंज ये है कि जो हम मेंटल रूप के कैसे वो काम करती है, काम कैसे करती है कि वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगी कि आप कैसा फील करते हो, या आप ऐसी सिचुएशन में होते हो तो आपको क्या लगता है, तो आप उसका रिस्पॉन्स देते हो। तो वो सारा डाटा कहाँ जा रहा है? सारा डाटा क्लाउड पे जा रहा है, वो उसके पास जा रहा है, आपकी सारी जो वो प्राइवेसी है वो वहां जा रही है, राइट। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैं शुरू में कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा चैलेंज है डाटा सीक्रेसी, डाटा प्राइवेसी, पेशेंट कंसेंट, है ना। पेशेंट ने जब वो ऐप इंस्टॉल करी तो कंसेंट दे दिया कि आई एग्री टू सबमिट माय डाटा एंड अलाउ दिस पर्टिकुलर प्रोवाइडर टू यूज दैट डाटा फॉर द रिसर्च एंड अदर पर्पसेस, तो वो हमने कंसेंट दे दिया, उसका क्या एप्लीकेशन होना हमें पता ही नहीं है, बट हम अपने डाटा दे रहे हैं। So before we use these apps, we have to be careful whether what kind of clauses are there. AI, artificial intelligence. These are the different startups or companies which are working in AI for transforming only healthcare. Only healthcare. AI only in healthcare. This is the around 110 companies which are listed here. This AI is being used in the different fields of the health sector, research and discovery, patient surveillance, post-marketing surveillance. Post-market surveillance क्या होता है? Pharmacovigilance. आजकल सभी को पता है pharmacovigilance. सारे बच्चे pharmacovigilance में जॉब करना चाहते हैं क्योंकि वो व्हाइट कलर जॉब है, राइट। और बाकी की जो फार्मास्यूटिकल फील्ड्स है, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन, R&D, राइट, उसमें बहुत कम बच्चे जा रहे हैं। देन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन, क्लिनिकल डेवलपमेंट, राइट, सभी फील्ड में AI का यूज हो रहा है। एंड AI का जो मेन एप्लीकेशन है दैट इज रोबोटिक्स। अभी जो देखेंगे रोबोटिक्स का application in healthcare is very important. It's a transforming the things. That is the height of automation. Robotics in surgery. Robotic surgery काफी पॉपुलर है पेडियाट्रिक्स में, खास करके जहाँ पे प्रिसीजन चाहिए, इन्फेक्शन के चांसेस नेग्लिजिबल, राइट, एरर के चांसेस नेग्लिजिबल। देन रोबोटिक्स इन पेशेंट केयर, जैसे हमने कहा कि पेशेंट से गलती हो सकती है, तो नर्स से गलती हो सकती है, राइट, लेकिन रोबोट से गलती नहीं होगी क्योंकि उसने बहुत प्रिसीजन से काम करना है, राइट। नर्सिंग स्टाफ कितना कम हो जाएगा अगर रोबोट से। रोबोट्स आर नाउ आल्सो अवेलेबल एज मेड्स। घर में अगर काम करने वाली परेशान कर रही है तो आप रोबोट रख सकते हो, राइट, वो अवेलेबल है। देन रोबोटिक्स इन सैंपल कलेक्शन। सैंपल कलेक्शन, अगर जैसे ये तो एक कोविड-19 का मैं केस दिखा रहा हूँ आपको, जहाँ से सैंपल लिया, क्योंकि कोविड-19 में सैंपल लेते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा थे,
तो उन्होंने रोबोट्स में सैंपल लिए। तो कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है, कहीं पे आग लगी है या कहीं पे कोई एक्सीडेंट सीन है या कहीं पे डीप इन द फॉरेस्ट कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब इंसान नहीं जा सकता, तो रोबोट जा सकता है, तो रोबोट सैंपलिंग लेके आता है। दिस इज व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, एंड मशीन लर्निंग बोथ। देन इन डायग्नोस्टिक्स टेस्ट करने हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करने हैं, राइट, उसमें रोबोट्स यूज हो रहे हैं, राइट, ऑटोमेशन यूज हो रही है। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल आजकल जितने भी प्लांट्स हैं दे आर WHO सर्टिफाइड, CGMP होना चाहिए, राइट, उसमें particulate matter का कंट्रोल, माइक्रोब्स का कंट्रोल, particularly in the strike products, right? तो वहां पे ऑटोमेशन जो है इट इज ऑल रोबोटिक्स। ये जो रोबोटिक्स देखा क्या, रोबोटिक्स हेल्थ केयर के हर एक सेक्टर में घुसी हुई है, राइट। आप रोबोटिक्स की ग्रोथ देखो, आप इन 22 the market size is $8.75 billion and in 8 years it will be $178 billion। कितने हो गए? 20 times, more than 20 times growth in 8 years in just artificial intelligence in healthcare. How much automation is involved now? How many innovations they are being taking place in AI or in healthcare? AI healthcare in India also, it is also booming like anything. So in 23 it is a $0.83 billion in India, and in 32 it is going to be $17 billion. Again 20 times increase. Another kind of digital tool which is used in healthcare is organ on chips. Organ on chips. मतलब अगर हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किसी ड्रग का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देखना है, थेराप्यूटिक इफेक्ट देखना है, टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज करनी है, तो क्या करना पड़ता है? We work on rat, mice, rabbits, monkeys, right? Clinical trials के लिए हम जाते हैं patients के ऊपर, right? So many ethical clearances are involved, institutional animal ethical committee who say clearance law, right? Then you have the limited number of patients or the animals which you can use, right? Now all that problem is solved because of organ on chips. They have prepared chips of organ. So this is how a chip is prepared, right? So that the 2D culture is nothing but a monolayer culture of any tissue culture जिसकी हम बात करते हैं, वो हम पहले कन्वेंशनली यूज करते हैं। That is under very sterile conditions, aseptic conditions, otherwise थोड़ी सी contamination हुई तो सारा एक्सपेरिमेंट बेकार हो जाता है। But now what is happening, that 2D culture is converted to 3D culture. 3D culture means that exactly behaves like an organ. For example heart, for example liver, for example kidney. तो किडनी का जो टिश्यू है उसको हम ग्रो करते हैं, राइट, अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, सो दैट बिहेव्स लाइक ए किडनी ओनली एंड दैट इज फिक्स्ड इन अ specialized chip, right, and supplied with blood-like material, right, vascular material, and that is connected to a power supply, right, so that behaves as a organ. That behaves as organ. See here how it is done. So this is HPTU means human-induced stem cells. स्टेम सेल्स, तो वो स्टेम सेल से जैसे हमने फाइब्रोब्लास्ट कल्चर किया, उसको फाइब्रोब्लास्ट को जब हमने एक स्पेशलाइज्ड मटेरियल है उसके साथ उसको हमने ग्रो किया, दैट बिकम्स अ कार्डियक टिश्यू। उस कार्डियक टिश्यू को देखो सेकंड में उसको माउंट कर दिया, नाउ दैट हैज बिहेव्ड एज दैट हैज बिकम हार्ट। सो इफ वी वांट टू डू रिसर्च ऑन कार्डियक टिश्यूज और हार्ट, right, we use this particular term, right, उसके नीचे जो blue आपको नजर आ रहा है ग्रे कलर का, that is a space given for the flow of
blood-like material. It's not blood, it is a blood-like material, we call it. It exactly behaves like a blood, right? So if you see the actually under the electron microscope, that is appearing like you see alpha-actin, green. That is actually heart muscle. Okay. So this is the total setup, actual setup, which is a scene, which is available, right? So you have the different organs. Every block, every well is acting as a one organ, right? So we can connect the different chips in such a way that it exactly behaves